So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start the session here. तो हम जल्दी से अभी सेशन को शुरू करने वाले हैं. You have to give me just 1 minute. So here we are connected and live. Vijay, Aniket, Vaibhav, good morning all. So we'll look into the session today. We'll start it. You have to give me just 1 or 2 minutes, and we are about to start the session. जल्दी से जल्दी जो है हम इस सेशन को शुरू करेंगे. Okay. So PDF for today's session has already been uploaded. PDF upload किया जा चुका है. Pranjal, Yashwini, good morning. The PDF for today's session has already been uploaded. You can download the PDF from our Telegram group. सीधा जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो. So please do comment if you are facing an issue related to notifications, that notifications are not reaching you. Okay. Please do comment. ठीक है ना. तो आपको कमेंट करना पड़ेगा अगर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहे हैं तो. So we will be starting this session very soon, and in today's session there is not much content. Okay, especially in editorials कुछ खास ज़्यादा आया नहीं है, but still हम लोग करेंगे. We'll see what exactly is there for us. देखेंगे उसमें क्या है. So let's start the session without wasting much time. Archita, good morning. So let's see what exactly is there for us in today's newspaper. चलिए तो शुरू करते हैं हम. क्या है करना है हमें सबसे पहले. So band hits road rail traffic in many states, and yesterday it was a crisis situation and people were facing this difficulty here. Okay, and already multiple you can say litigations are also going on regarding these particular protests. So people, especially the industrialists who are living in outer Delhi region, they are demanding that government should do something now. Okay, this is the high time that transportation, Delhi commuters, they have been impacted by this. एंड इसका क्या सोल्यूशन होगा ये गवर्नमेंट को पता है. ठीक है ना. लाइक इट इज अप टू देम टू डिसाइड वेदर दे वांट टू कैरी आउट दीज टॉक्स और नॉट. Even the UP government, Haryana government, they have said that they have tried their level best to outreach to these farmers who are sitting, who are agitating, कि इन तक पहुंचने के लिए जो है ये सब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, but things are not turning up. Okay, so this is the problem that we are facing right now. This is the problem that we are facing now. We know that right to protest, okay, is a fundamental right. Protest karna fundamental right hai. Okay, that's fine. But what about fundamental right of movement, as it is impacting the fundamental rights of other people? दिस इज द पॉइंट हेयर. ठीक है ना. ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि किसी का राइट है प्रोटेस्ट करना. ओके फाइन, बट इट शुड नॉट इम्पिंज अपॉन द फंडामेंटल राइट ऑफ अदर्स. और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है. दैट्स व्हाई इट्स अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन. ओके, एंड द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग राइट नाउ, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम कि अब सरकार को कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा. ठीक है ना. दिस इज सीरियसली द हाई टाइम हियर. ओके, सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है. अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है. Now we'll move to this part here. They are talking about okay jobs up 29%. ठीक है ना. jobs 29% ऊपर आ चुकी हैं. Okay, and this is the present survey which is releasing these data, and we will look into this in detail. इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या कर रहे हैं. Okay, so all India quarterly establishment based employment survey is released on Monday. Now it is saying that overall employment numbers had increased by 29% from the base year of 2013-14. Okay, उसके हिसाब से देखें तो इतना बड़ा है. However, in the first quarter of this fiscal, 27% of the establishment surveyed reported पेंडेमिक रिलेटेड रिट्रेंचमेंट. मतलब लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं. ठीक है ना. 27% ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स आर सेइंग दैट कि यहाँ पे रिट्रेंचमेंट था. पीपल दे हैव लॉस्ट देयर जॉब. Overall employment stood at 3.08 crore in the first quarter, like up from 2.37 crore. It means that okay, things will be fine, चीजें अच्छी की तरफ बढ़ रही हैं. But the point is that just have a look, okay, over the absolute numbers. अगर हम absolute numbers की बात करें, so whatever employment projection this survey is providing, this is highly inadequate. Okay,
This is highly inadequate. You should know about this thing. Now there is a debate over it. Okay, Modi ji and other, they say that India should look for demographic dividend. Okay, we talk about it, demographic dividend. Now you tell me one thing. Can we seriously say that this demographic dividend we will be able to reap without creating employment? जब तक आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करोगे, तब तक क्या आप इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को वाकई ही उसके फ्रूट्स को आप जो है अपने फायदे के लिए यूज कर पाओगे? दैट्स द की पॉइंट हियर. ओके, सो दे आर सेइंग दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट विदाउट एम्प्लॉयमेंट इट्स ऑफ नो यूज. Now, if employment is not provided, this dividend can turn into a disaster. Okay, कैसे disaster होगा? It may lead to alienation of your youth. आपका यूथ जो है यहां से एलियनेट हो जाएगा, एलियनेशन ऑफ यूथ, एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू. नाउ यू टेल मी वन थिंग, जॉबलेस यूथ, don't you think cases related to drug abuse it will increase? Okay, cases related to crime in the society, it is going to increase. So people, if they are not having adequate jobs, तो वो करेंगे क्या? यही सब कुछ करेंगे. ठीक है ना? Now, okay, you have provided them with employment and all, employment आपने दे दी. What about wages? क्या आपके यहाँ पे wages अच्छे से, जो wage code, whatever the wage code, the legal system that the government has brought in, can we say that we are implementing it in letter and spirit? सीरियसली आप बताइए, क्या वेज कोड कहीं पे लेटर एंड स्पिरिट में लगता है? यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन डेफिनेटली टॉक टू द सिक्योरिटी गार्ड नियर बाय यू. आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से जो है आपके आसपास होंगे, उनसे बात कर सकते हैं. दे विल टेल यू द ट्रुथ, they will tell you the truth. Okay, so these are the issues that are prevailing in our society. Now there was a survey which was saying that okay, employment generation is just one part of it. Apart from that, you have to work on providing wages. Wages provide करना भी बहुत जरूरी है. Now when the wages are going to increase, this is only going to generate demand in your economy. यहीं से तो demand आनी है. Without increasing wages, without creating employment, we will not be able to pick demand. Okay, that's the key point here. ये major बात जो है इन्होंने यहाँ पे निकालनी है आपको. ठीक है ना? We'll move to the next part now. Right to government aid. Okay, like not a fundamental right. This is what Supreme Court is saying. We will look into this in detail. So right of an institution, whether run by the majority or minority community, to receive government aid is not a fundamental right. ऐसा क्यों? देखिए, if government made a policy to withdraw aid, an institution cannot question the decision as the matter of right. This is what Supreme Court is saying. So it is in the hands of government that किसको aid देना है, किसको नहीं देना है. If the government is withdrawing aid, then they cannot question the government. वो government को question नहीं कर सकते. This is completely the prerogative of the government to decide on this particular matter. Okay, so an institution is free to choose to accept grant with the condition or go its own way. Definitely government is going to give you grant with some conditions, because regulations are required. Absolutely आपको किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं मिल सकता. Okay, and more or less government provides tied funds. अब ये tied funds क्या होते हैं? They are for a specific task. Okay, सिर्फ एक ही particular task के लिए आपको पैसा मिलेगा, and this is the arrangement that we have. ये अरेंजमेंट फॉलो होता है यहाँ पे. ठीक है ना? सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ओके, अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है. विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे सीधा एडिटोरियल पे चलेंगे, देखेंगे क्या है यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर. ओके, what exactly today's editorial is talking about. Now they are talking about Quad could end up running up of steam. Okay, so basically the debate is between AUKUS and Quad. Okay, AUKUS versus Quad, this is the debate. Now you tell me one thing. AUKUS, it has the military component in it. Okay, it has the military component in it, and because of the military element, can we say that it is going to, you can say, discredit Quad, कि कहीं ना कहीं Quad के ऊपर इसका impact पड़ेगा. It is going to reduce the popularity of Quad. Is it going to be like this? Okay, now this is the debate which is going to happen. Now it has too many items on its agenda. With the announcement of AUKUS, faces the danger of becoming a talk shop. Okay, ये सबसे बड़ा डर है, because all the focus is right now on AUKUS. Okay, focus is on AUKUS. Because of that, no one is talking about Quad. And I am telling you this thing, military element is really the crucial element here. Okay, और AUKUS के पास है और Quad में नहीं है. This is the debate right now. Okay, this is the debate right now. So we know about this thing. AUKUS is a
like trilateral security partnership, ठीक है ना, and quad is a like quadrilateral security dialogue. Okay, ये partnership है, legal है, एक तरीके से alliance है, ठीक है. It has a formal shape, formal structure. This is one of the difference. So announcement of the AUKUS and the recent outcome of the Quad summit indicate that AUKUS will go on to form a key security arrangement in the Indo-Pacific region. Okay, अब ये AUKUS बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? Just think about it. Why? What was the requirement of having this AUKUS? First of all, because you already had Quad, आपके पास already Quad था. Okay, and already there were talks of Quad plus कि Quad को extend करके और members लेके आते हैं. Now UK could have joined it. UK इसको ज्वाइन कर लेता. Why there is a separate arrangement for this AUKUS? Okay, so first thing is that you need to understand this thing. Now there are two countries which are quite nearer to the China's mainland. Okay, one is India, which is sharing the land border. Other is Japan. Okay, now you tell me one thing. These two countries, they don't want to, you can say, angry China. They don't want that China should take some action. Okay, so they want to keep things on a deterrent point only. कहीं ना कहीं वो सिर्फ deterrence ही बना के रखना चाहते हैं, ठीक है ना, उतने तक ही रखना चाहते हैं. They don't want to go further. That's why they might be reluctant to give the shape, to make Quad a military alliance. वो इसीलिए थोड़ा reluctance होंगे. Okay, so it is not just about India. Even Japan would have also been concerned about it. वो भी इसको military alliance में नहीं बदलने देगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना. So there are experts which are blaming India for this. Okay, so experts जो है वो सिर्फ India को blame कर रहे हैं. So it will not be like this. You need to understand this thing. When you are sharing a border, it means that your position is going to be different from others. आपकी पोजीशन दूसरों से थोड़ी अलग है, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा. ओके, नाउ you need to understand, thereby potentially forcing the Quad to recede in the background. Right now the Quad is in background. Okay, so but before we get to implication of AUKUS on the Quad, let's briefly examine how AUKUS is also useful to the Quad. Okay, so let's look into this, that how AUKUS is useful to the Quad. Now AUKUS seeks to unambiguously signal US President Joe Biden's commitment to US allies, especially in the Indo-Pacific region. Okay, that okay, if there is a situation which may demand military action, then US will not go back. Okay, कि US उस केस में वापस नहीं जाएगा, and in the Indo-Pacific region it is ready to counter China. This is the point here. AUKUS helps reassure its allies of US security commitments and underlines the Washington's pivot to Indo-Pacific. Okay. Second point is that the deal and particularly the sharing of American nuclear submarine technology with Australia will help Australia overcome past hesitation about taking on China with more conviction. Okay. So you should know about these developments. देखो चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया का क्या एक तरीके से एंगल था. So this was the game which was played by China here. Okay, now Australian economy is dependent on China. You need to understand this thing, ठीक है ना. अब ये इकोनॉमी जो है आपकी यहाँ पे डिपेंडेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक डिपेंडेंट, वी नो दैट चाइना हैज द मिलिट्री माइट. ओके, अब ये मिलिट्री माइट चाइना का अच्छा खासा है. इन दैट सिनेरियो there were differences. Australia demanded that okay, the coronavirus investigation should be carried out in an independent manner. ये सब इन्होंने बोला था. China retaliated. China said that okay, we will reduce your trade. Now using trade as a weapon. Okay, using trade as a weapon. Apart from that, we know one thing. China is increasing its naval submarine fleet. Okay, वो अपने submarine fleet को यहाँ पे बढ़ा रहा है, ठीक है ना. And its submarines basically they are located, they are moving in Pacific Ocean, और वहां पे वो कहीं ना कहीं Pacific Ocean में ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट के आसपास ही मूव कर रहे हैं, ठीक है ना. So Australia needed these particular non-conventional nuclear submarines, की जरूरत है इनको इन submarines की. Okay, ये बात समझनी जरूरी है, ठीक है ना. So that they can take on China. Okay, so that they can take on China with a heavy hands. हाथ में कुछ होगा तभी तो आप अच्छे से हरा पाओगे. Okay, इतनी बड़ी ताकत है. This is the point here. This is the point and focus here. Apart from that, what is special about UK plus Australia plus US? Three of them are already under NATO. वो already NATO allies हैं. आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना. So when you are a NATO ally, it means that you are already under a military arrangement. आप कहीं ना कहीं खुद ब खुद ही already military alliance में हो.
सो कुछ खास आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने की जरूरत नहीं है. यू नो ईच अदर, हाउ डू दे ऑपरेट. ओके, यू आर वर्किंग टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स. आपने अफगानिस्तान में भी साथ काम किया है. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर टू बी कंसिडर्ड. ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको समझने होंगे. ओके, now notwithstanding the point that AUKUS may set alarm bells ringing for the Quad, AUKUS is still a shot in the arm of larger Indo-Pacific agenda. Okay, of which India, US, Japan, Australia and among others are key partners. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है ना. सो बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग हो सकता है, बिकॉज दिस माइट अंडरमाइन देयर इंपॉर्टेंस, बट डेफिनेटली इट कैन बी यूज फॉर पॉजिटिव आउटकम ऑल्सो. आपके पॉजिटिव आउटकम के लिए भी इसका यूज होगा. सो ओकस विल हेल्प क्वाड्स डिक्लेयर्ड एम ऑफ कीपिंग द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री. गोल तो आपका सही है कि येट यू आर प्रमोटिंग ओपन एंड इंक्लूसिव ट्रेड. देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन टू द सी लेन्स. आपके यहाँ पे आपके नेवल शिप्स को कोई नहीं रोकेगा. ओके, फ्री आपका नेविगेशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू आर गोइंग टू अचीव दैट टारगेट. ठीक है, वो ठीक है. But replacement, no replacement but. Okay, AUKUS may not replace Quad, and yet it appears that AUKUS has ventured where the Quad has been reluctant to make forays, that is the military domain. ये बात बिल्कुल सही है. Military domain में reluctance था, and I told you the reason also, because we are sharing the border, Japanese are sharing the border, others are not. ठीक है, जापान जो है वो ज्यादा दूर नहीं है मेनलैंड चाइना से, और इंडिया का तो बिल्कुल फिजिकल बॉर्डर लगता है. ओके, सो ओकस आल्सो एक्सपोजेस द इनहेरेंट आल्सो सेल्फ इंपोज्ड लिमिट्स ऑफ द क्वाड, दैट इज इट्स इनएबिलिटी एंड लैक ऑफ डिजायर टू गिव इटसेल्फ अ मिलिट्री रोल. अब वो चीज हमें पता है क्यों नहीं हो रहा. Quad is unlikely to take a security dominated turn. That is precisely the vacuum AUKUS seeks to fill. Okay, so ये बात आपको समझना है कि क्वाड कभी एक लेवल से आगे नहीं जाएगा, and in that scenario AUKUS is filling that gap. Okay, so larger question then is whether Quad is losing its steam. At present it might be looking. Okay, आज की डेट में आपको लग रहा है. Now it has neither a secretariat nor a charter like Shanghai Cooperation Organization, nor a clear set of initiative such as AUKUS. The ever-growing list of focal areas of Quad will eventually make it less than useful deliverability forum. The point here is that Quad इतने ज़्यादा काम करेगा, but वो क्या deliver कर पाएगा? Okay, will it play that role? That's the fundamental question here now. Okay, will it be able to play that role? Now Quad faces the danger of becoming a talk shop. Okay, where people will come and they will only talk. It will not be able to produce anything concrete. कुछ भी खास concrete आपको नहीं मिलने वाला है. ठीक है ना. So these are the concerns. Now there is a little interest in properly institutionalizing the Quad, nor has the objective for Quad plus been purposely pursued. Okay, now India Pacific remains a grand strategic vision. AUKUS has the potential to become a major military security arrangement in Indo-Pacific. The Quad plus could end up becoming a talk shop within the Indo-Pacific. Okay, so ये major concern समझ में आ रहा है कि it will just end up as a talk shop. ये बिल्कुल एक talk shop की तरह end हो सकता है. Okay, so New Delhi has taken the stand that there is no link between AUKUS and Quad, like just as it had argued earlier, क्योंकि हम किसी भी हालत में चाइना को नाराज नहीं कर सकते हो. ठीक है ना, ये पॉइंट आपको समझना होगा. ओके, नो डाउट वी डिड कैरी आउट द नेवल एक्सरसाइज, मालाबार नेवल एक्सरसाइज हमने जरूर की थी, बट स्टिल यू डोंट वांट टू एंग्री चाइना हियर. ओके, सो आपको कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर भी करना है, बट विदाउट मतलब विद मेकिंग श्योर दैट चाइना डजंट बिकम एंग्री एंड मे टेक सम लाइक provocative step. Okay, कोई coercive step चाइना ना ले जाए. So you have to work on this particular line. Okay, so ये चीज आपको make sure करनी है. So be it AUKUS which enables Australia to stand up to China's bullying and provides UK its aircraft carrier HMS Queen Elizabeth, the flagship of UK's carrier strike group in the region, with more prominent and desirable role in the Indo-Pacific and annual Malabar exercise. Okay, or the annual Malabar exercise which focuses on Indo-Pacific and the Quad. देखो इन सब के aims कहीं ना कहीं same नजर आ रहे हैं, and they will be active in Indo-Pacific region only. Okay, वहीं पे ही they will be showing their activity. This is the point here. Now while there are no technically related to each other, there is a broader reality that unites them. There is no point in refusing to accept that self-evident reality. Okay, so Indo-Pacific is of great importance in India for the number of reasons. Given the continental challenges it faces, including from the new development in Afghanistan, New Delhi would do well to shift some attention to the maritime sphere. Okay,
and we are already working on strengthening our navy. Second thing is that at a time when India is continentally pressed against a rock and a hard place, an opportunity has presented itself for India in the form of growing global interest in Indo Pacific region. Okay, so पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जो है इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है, तो हमारा भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. ओके, सो इट इज ऑल्सो अ मेजर वे ऑफ bringing together like-minded states to check Chinese hegemony in the region. If AUKUS potentially overshadows the enthusiasm around the Quad, it would be disadvantageous to India's interest. Okay, अब ये मेन चीज फोकस है, ठीक है ना. अगर ओकस कहीं ना कहीं भारी पड़ गया क्वाड के ऊपर, देन इट इज गोइंग टू इंपैक्ट इंडियाज इंटरेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ओके, सो इंडो पैसिफिक अरेंजमेंट की बात करें, एंगेजमेंट की बात करें, नाउ दिस सिचुएशन इज मेड वर्स बाय इंडियाज हेजिटेशन अबाउट ज्वाइनिंग मेजर रीजनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स. हम रीजनल फ्रेमवर्क्स को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, चाहे आप आरसीईपी की बात करो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करो. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न, मीन्स यू आर नॉट एंटरिंग द ग्लोबल गवर्नेंस यूनिट्स. सो ये सारे बेसिकली क्या हैं? दे आर बेसिकली ग्लोबल गवर्नेंस यूनिट्स. ओके, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन यूनिट्स. So when you are not entering these particular units, definitely it is going to impact your interest. आपका इंटरेस्ट तो यहाँ पे impact होगा ही होगा, ठीक है ना. That's the point here. Okay, that's the point here. Now even before AUKUS, India's current engagement of Indo-Pacific was neither capable of contributing to a national security nor promoting its economic influence in the region. Okay, now AUKUS may have further shrunk the potential space available for Quad to play a serious role in region security architecture. Okay, this is the point here. AUKUS may have further shrunk the potential space available for Quad. बिल्कुल क्वाड के लिए स्पेस कम होगा, ठीक है ना. नाउ सोर्सेज ऑफ इंडियाज हेजिटेशन, क्या रीजन है इंडिया की हेजिटेशन के लिए? ओके, सी एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग, मिलिट्री डोमेन के अंदर इंडिया थोड़ा हेजिटेट करता है. ओके, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड मिलिट्री थिंग हियर बिकॉज वी हैव अ ट्रेडिशनल policy of reluctance about military alliances. Okay, traditionally India has never entered a military alliance because we know that we love our autonomy. आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना चाहते हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. व्हेन यू गो अंडर मिलिट्री अलायंस, यू माइट नॉट बी एबल टू कंजर्व योर ऑटोनॉमी. आप अपनी ऑटोनॉमी को प्रिजर्व ना कर पाए. दैट कुड बी द केस हियर. ओके, वो एक मेजर केस हो सकता है, ठीक है ना. However, possible to explore military utility of the Quad without making it formal military alliance. ये चीज आपको एक्सप्लोर करनी है, मिलिट्री यूटिलिटी एक्सप्लोर करनी है. यू शुड कैरी आउट द मालाबार एक्सरसाइज, उस टाइप की चीज आप करते रहें, बट नेवर गिव इट द शेप ऑफ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस. एज आई टोल्ड यू, आवर फोकस इज ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. ओके, नहीं तो आपको भी वही सब करना पड़ेगा. यूएस वांट्स टू गो फॉर अ वॉर, फिर आपको जबरदस्ती लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना. सो दिस इज द पॉइंट हियर एंड वी ऑल्सो वांट टू अवॉइड एनी मिलिट्री ओवरटोन विद चाइना. कहीं पे भी आप चाइना को नाराज नहीं करना चाहते हो. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल थिंग हियर. ओके, बिकॉज यू आर शेयरिंग अ बॉर्डर एंड थिंग इज दैट यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स. दिस इज द रियलिटी, वी हैव टू लिव विद दैट. सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द अनदर एडिटोरियल. This is the other editorial. Okay, so we'll start that up now. Before moving to that, we'll look into this. Okay, this is again political editorial related to Congress. So now Indira Nooyi, like, she is promoting a book here. Okay, so again we are not going to cover it. इसको भी हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं. एंड विल डायरेक्टली मूव टू द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, एंड दिस इज वन ऑफ इट. ओके, सो रिवाइटलाइजिंग पीएम कुसुम. सो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना. सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, recently reviewed the progress of PM Kusum scheme and reaffirmed the government's commitment to accelerate solar pump adoption. Okay, so launched in 2019, PM Kusum aims to help farmers access the reliable daytime solar power for irrigation, reduce power subsidies and decarbonize the agriculture. Okay, so solar panel, solar power pump लगते हैं यहाँ पे, ठीक है ना. सोलर रन. ओके, सोलर रन जो है आपके पंप आप लगाओगे, ठीक है. सो उसके लिहाज में है. अनिकेत, आई लुक इनटू योर डाउट, just wait. Okay, so but pandemic included disruptions, limited buy-in from the states and implementation challenges have all affected the scheme's rollout. Okay, क्योंकि कहीं ना कहीं states का attention अभी नहीं है इसके ऊपर. Now PM Kusum provides farmers with incentives
to install solar power pumps, okay, and plants in their fields. Now they can use one of the three deployment models, like off grid solar pumps are there, मतलब grid के साथ कोई connectivity नहीं होगी. Then you have solarized agricultural feeders, okay, सिर्फ agriculture purpose के लिए आप इनको use करोगे. Then grid connected pumps. अभी grid connected pumps क्या करेंगे, मतलब आपके पास extra electricity generate हो रही है, when your pump is not working, जब आप use नहीं कर रहे हो उसका, then you can transfer that particular you can say extra generated electricity to the grid. आप grid के अंदर वो transfer कर सकते हो. This is the arrangement that we have. Now off grid pumps have been the most popular, but nearly 2.8 lakh systems deployed fall for the short of scheme's target. Okay. Barriers to adoption include limited awareness about solar pumps and farmers' inability to pay their upfront contribution. Progress on the other two models have been rather poor due to regulatory, financial, operational and technical challenges. Only a handful of states have initiated tenders and commissioned projects. State governments जो हैं बिल्कुल आगे नहीं आ रही हैं. This is the major concern here. Okay. Now both models are worth scaling up for. They allow farmers to earn additional income by selling solar power to discoms. Okay. We propose 5 steps for tackling the myriad challenges linked to PM Kusum implementation. First is that extend the scheme's timelines. Most Indian discoms have a surplus of contracted generation capacity. Okay. Extending PM Kusum's timeline beyond 2022 would allow discoms to align the scheme with the power purchasing planning. तो power purchasing की planning जो है उसके according वो कर पाएंगे. Second is that create a level playing field for distributed solar pumps. Now selling surplus power to discoms is one of the main attraction of grid connected models. Yet discoms often find utility scale solar cheaper than the distributed solar. Okay. अब ये अरेंजमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है आपको. टू टैकल द बायस अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर वी नीड टू एड्रेस काउंटर पार्टी रिस्क. ओके, ये पॉइंट है यहाँ पे. ग्रिड अनअवेलेबिलिटी रिस्क एट डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस, standard tariff determination to reflect higher cost of distributed power, and do away with waiver of ISTS charges. Okay. Streamline land regulation through inter-departmental coordination. Now doing so will help reduce the delays in leasing and converting the agriculture land for non-agriculture purpose. ये इसका additional use है, ठीक है ना, कि आपकी जो है लैंड रेगुलेशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा so that you can convert the agriculture land for non-agriculture purpose as well. Okay. Support the innovative solution for financing farmers contribution, वो ढूंढना पड़ेगा. So this is what we can do. Now other problem will be bank loans without collateral. You have to make an arrangement for this particular thing, as collateral का मतलब होता है गिरवी रखने के लिए, ठीक है. So farmers may not have anything to keep as a collateral. Okay, they might not be able to produce documents also. तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है. Other thing is that like go for the grid connected solar pumps here. Okay, so current obstacle to their adoption include the concern about economic viability, whether they will be economically viable or not. Okay, इतना बड़ा आप तामझाम लगाओगे तो उसके लिए पैसे रिटर्न कितना बेनिफिट आ रहा है. ओके, दैट विल आल्सो बी द कंसर्न हियर. सो ग्रिड कनेक्टिविटी मॉडल रिक्वायर्स पंप्स टू बी मीटर्ड, बिल्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस, बट सफर्स फ्रॉम अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन फार्मर्स एंड डिस्कॉम्स. ओके, अब ये सबसे बड़ी समस्या है. अडॉप्टिंग सॉल्यूशंस लाइक स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर्स एंड एंगेजिंग विद फार्मर्स कैन बिल्ड ट्रस्ट, but piloting the model under different agroeconomic contexts will be critical to developing a strategy. Okay. So the scheme, if implemented successfully, can generate thousands of jobs, reduce the carbon footprint of agriculture, result in oil import savings. Okay, so ये कुछ चीजें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है और इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना. सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं. सो DRDO it tested this Akash Prime missile. Okay, how it is different from the Akash normal missile here, because this has the indigenously developed active radio frequency seeker for improved accuracy. Okay, so this is the new arrangement that has been added और उसमें से जो है इसकी accuracy काफी अच्छी हो गई है. आकाश इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है ना. इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर पे भी इसका यूज करेंगे. कोई प्लेन आ रहा होगा आप उसको गिराएंगे नीचे से मिसाइल लॉन्च करके. ओके, सो अनिकेत यू आर आस्किंग सर हाउ देन ऑटोनॉमी इज disturbed means what? Okay, see you need to understand, I told you about this thing, when you are going into military alliance. जब आप मिलिट्री अलायंस में जाते हैं उसका मतलब क्या होता है. So if US will be attacked, अगर US के ऊपर किसी का अटैक होगा, so India will also come to rescue US, ठीक है ना. That is the condition that you have with military alliance. Okay, suppose India is attacked, then US will come to our rescue. फायदा भी होता है
But the point is that what is the strategic signaling that we are going to have? स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग क्या इसके असर पड़ेगा, ठीक है ना? व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग इफ यू गो विद द मिलिट्री अलायंस ऑन चाइना? You tell me one thing, we have a neighbor and we can't change our neighbor, okay, that's for sure. So the point here is that in anyhow we cannot signal China that we are getting too close to US, कि यूएस के बहुत ज्यादा क्लोज जा रहे हैं सो दैट चाइना की इनसिक्योरिटी और बढ़ जाए, एंड व्हेन अ पर्सन इज इनसिक्योर दे माइट टेक सम इररेशनल एक्शन दैट विल बी मूवमेंट, मिलिट्री मूवमेंट अक्रॉस योर बॉर्डर. वो चीज हम बिल्कुल भी यहां पे नहीं करना चाहते, ठीक है ना? दैट्स द की पॉइंट हियर, ओके? कहीं पे भी कहीं मिस कैलकुलेशन ना हो जाए. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, नाइदर चाइना इज इंटरेस्टेड इन वॉर. ये एक दूसरे को आंखें दिखाने का खेल चलता रहता है. But if you are going for a military alliance, then it may lead to a undesirable consequence. And the point here is that, okay, we know that US carries out multiple military missions across the globe. हर जगह तो यहाँ पे इन्होंने पंगा डाल रखा होता है. So in that scenario, we never want India to be indulged in that. हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, because we have our own domestic limitation. हमारी अपनी domestic limitation है. You need to understand this particular thing. We have our own domestic limitations and we have to address to that, okay? This is the point here, and that's why we cannot lose our strategic autonomy. जब आप military alliance का part नहीं हो, you still have the control over your autonomy. You can take decision the way you want. अपने हिसाब से आप अपनी policy को बना सकते हो. That's the point here, okay? That's the point here. So on this particular page there is nothing much, कुछ खास नहीं है. We'll move to the next part now. आगे चलते हैं, okay? So again political things are there. So PM launches health ID for every citizen, okay? So Ayushman Bharat digital mission will bring revolutionary changes. This is what Modi ji is saying. So Ayushman Bharat digital mission will bring revolutionary changes in the health facilities. There is a campaign for strengthening the health facilities that have been going in the past 7 years. और ये उसके अंदर एक तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है. इट्स अ गुड थिंग, ओके? सो वी आर गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी हेयर. आप टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, एंड ऑलरेडी वी लाइक मोदी जी सेइंग दैट सो फार अबाउट 125 crore remote consultations have been completed through e-sanjeevani, okay? E-sanjeevani is a portal through which we can carry out, we can give telemedicine facilities, okay? तो ये arrangement हमारे पास already है. Now this facility is connecting thousands of countrymen living in far-flung parts of the country every day with doctors of big hospitals of the cities, okay? वो सब यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है ना? डॉक्टर्स जो है शहरों में है, पेशेंट्स जो है वो विलेजेस में है. We know this particular thing, and this is the way out. You have to use technology, okay? Doctors will not move to village area. क्यों? वहाँ पे facilities नहीं है, ठीक है ना? They are very much right in that aspect, okay? वो बिल्कुल सही है इस बारे में. So these are some of the issues which are prevailing. Now ICRA raises financial year 2020 growth estimate to 9%. It is really good, okay? काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पे. So but there are a lot of things which depends upon the vaccination, okay? So if you are able to vaccinate yourself, आप अच्छे से पूरी कंट्री को वैक्सीनेट कर पाओ, then we will not require lockdowns. उस केस में lockdowns आपको नहीं required होगा, and definitely you can go ahead with your economic activity. आप अपनी economic activity को continue रख पाएंगे. This is the point here. So rating agency ICRA has bumped up the GDP forecast. Like it was earlier, it was saying that 8.5%. Now it is saying 9%, which is good. Okay, काफी अच्छा होगा. And as I told you, it is also pointing out that vaccination and the healthy Kharif estimates, they are very important. Okay, so potential third wave, which whether existing vaccine can protect against the new variants. These are some of the things that we have to look into. और यही चीज decide करेंगे कि whether our economy will remain इन द स्टेट विच इज राइट नाउ, कि अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी. ये पॉइंट समझना जरूरी है, ठीक है ना? सो ये पॉइंट समझना जरूरी है. दे आर ऑल्सो सेइंग दैट इंक्रीजिंग द वैक्सीन कवरेज विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड री एनर्जाइज द डिमांड, ओके? तो ये एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे होगी अगर आप वैक्सीनेट सबको पहले से कर लेते हैं तो. अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं. ऑन इंटरनेशनल पेज, ओके, यूके वॉरशिप मेक रेयर ट्रांजिट वाया ताइवान स्ट्रेट. सो एज आई टोल्ड यू, इट इज what is called AUKUS. AUKUS जो है कहीं ना कहीं अपना एक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? So now like British ships are also entering the region, और ये यहाँ पे इस तरीके से गेम चल रहा है. So that's why the region is really important now. पूरी दुनिया की नजर यहाँ पे है, okay?
So a new government, a new leadership will be there in Germany, and we have to wait and watch क्या होगा यहाँ पे. Okay, so they already have a very complex electoral system. बहुत complex electoral system है Germany का. Okay, but according to Germans, they said this is the perfect. ये इनका सिस्टम बहुत परफेक्ट है, उनके हिसाब से ऐसा है. बट somehow they are managing it, इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो. इट्स अ गुड थिंग. सो यू माइट सी अ न्यू लीडर, न्यू गवर्नमेंट इन जर्मनी. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.